Yes, Please go. Be seated. Thank you, sir. Take your seat. Introduce yourself. So my name is Anshu Shandil. I have pursued my BTech in civil engineering from JP University of Information Technology, Vaknahat. Currently, I am working in Himachal Pradesh Secretariat on the post of clerk. But both my parents are in police department, and currently they are posted in Shimla. My hobbies include playing and watching football, especially the English Premier League, as well as listening music. So I belong from the Queen of Hills, Shimla. Right. And what was your optional paper in HS? So my optional was anthropology. Anthropology. Yes. Right. There are. How would you like to be interviewed? Either in Hindi or English? So it's a bilingual. Bilingual. ये गर्म पानी के चश्मे कहाँ कहाँ हैं हिमाचल प्रदेश में? Sir, गर्म पानी के चश्मे, as in hot water springs. Or water springs. So one is present in Tattapani area. The other one that is very famous, sir, it is in Manikaran, which is a religious place for Hindus as well as for the Sikhs. So currently I can recall only two of these. चलिए, ये जो आपने मणिकरण का नाम लिया, why it is named मणिकरण? Sorry sir, I'm not aware about. और आपने बोला कि दो रिलीजन के लोग वहाँ वर्शिप करते हैं, कौन कौन से हैं? सिक्स एंड Sikhs and हिंदूज। Hindus. सिक्स जो हैं वहाँ गुरुद्वारा है और खाना उनका सारा लंगर जो गर्म पानी में Yes, बनता sir, है, गर्म पानी. वो क्या बिलीव करते हैं कि गर्म पानी कैसे निकलता है? So from point of view of geology or from the religious beliefs? रिलीजियस जियोलॉजी Sorry sir, I'm not aware about it. जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। So from the geological point of view, when the hot molten material, that is magma, deep within the earth surface, it finds some spot to accumulate in some regions within the earth surface, and when there is a water body and it penetrates deep into those cracks and come in contact with the geothermal heat or in direct contact with the magma, it heats up, so a hot water body is created on the earth, that is spring. एक आपने हिंदू बिलीफ क्या है वहाँ? मणिकरण जो है, अच्छा यू नो मणिकरण, शिव का टेम्पल क्यों है वहाँ? Yes sir, there is a Shiv temple, but sorry sir, I am not aware. करसोग नाम सुना है? Yes sir. कहाँ है? Sir, Karsoke lies in district Mandi. नाम क्यों पड़ा करसोग? Sorry sir. चंबा में एक टेम्पल है, माता है हडिम्बा का, सॉरी कुल्लू में, मनाली। Yes sir. ये हडिम्बा नाम क्यों पड़ा और कौन थी? Sir, Hidimba is a wife of a legendary figure of Mahabharata, that is Bhim, and she was regarded as a demon princess. आपका एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये जीन्स क्या होती है? So genes are genetic material जो हमारे cells में जब हम from the ovules from our mother side and from the sperms from our father side. So the genetic information that is passed on to us from both our parents, which help in defining the progressive characteristics or the other bodily characteristics that we may develop at any future stage. ये जो है कितनी जनरेशन तक ट्रेवल करती है? Sir, Genes. So genes can travel. Sorry sir. इस जीन्स के साथ कनेक्टेड है हमारे जो एप्टीट्यूड्स हैं Yes sir. और एक एप्टीट्यूड है। कौन सा जीन से कनेक्टेड है, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड? Sir, altitude. है जी, एटीट्यूड। Yes sir.
एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड क्यों बताओ, एटीट्यूड कैसे फॉर्मेशन होता द डिफरेंस बिटवीन द टू एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का डिफरेंस क्या है? Okay, attitude and aptitude. है? हाँ, So attitude is not, sorry, I would like to correct myself. So attitude is not connected to our genes. So it is something that we can develop, we over gradually as we grow up, as we gain experience from other happenings around us. So aptitude is something that we can inherit from the genetic material that is transferred from us. which is more important, attitude or aptitude So I think for you, for me or any? सर आई थिंक अ बैलेंस बिटवीन बोथ इज नेसेसरी, क्योंकि हमें आगे प्रोग्रेशन भी ज़रूरी है, एंड एटीट्यूड इज समथिंग दैट वी प्रोजेक्ट, हाउ वी प्रोजेक्ट आवरसेल्फ टू अदर्स, एंड एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट we can project from within ourselves, our perception about us. अच्छा, ये आपने ये इसमें लिखा है अपने बायोडाटा में, Yes, sir. हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवियरेंस। हार्ड वर्क और परसिवियरेंस में क्या फ़र्क है? आपने दो अलग सब Yes, sir. हार्ड वर्क। So hard work is a quality of not giving up and working for your set goal, and not be demotivated by the failures. And for perseverance, so it is a constant motivation that this is my set goal and I have to achieve this, and that is a motivation that comes from within, that these are my set goals, and My continuity of hard work is perseverance. Simple सी बात है. yes. Thank you. That is, then you have written here, smart thinking. These days, you know, आजकल हम क्या करते हैं हर एक जगह, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट सिटी, Yes, sir. स्मार्ट थिंकिंग। वो स्मार्ट थिंकिंग क्या है आपकी? So smart thinking is thinking something out of the box, or Out of the? out of the box, having innovative ideas. You are from Shimla. Yes, sir. Name some important passes in Shimla district. So one that I can think of is the Chanchal Pass, which connects Shimla district to the neighboring Sirmaur district. Mhm. So that is all I can recall. Okay, from Shimla to Ricampio, how many hydropower projects are इसको there? ऊपर ही डाल देते From Shimla to Ricampio. हैं, बार-बार कहते हैं। So one there is Rampur hydropower project. The other one is What is the capacity of that plant? so approximately 400 megawatt. Okay. So, Any other? so the next is Bhaba hydroelectric power project. The other one is Where is it actually? So it is in Bhavanagar. It is in Kinnaur district. Okay. The other And what is the one- capacity of that plant? So I'm not able to recall right now the capacity of that. So the other one is Sanjay Vidyut hydropower project, which have turbines underground, and these three. In Shimla district, there is frequent means cases of landslides. Yes, sir. What is the long-term solution of this? After means so much good technology, So, we so, are again. so in Shimla district or In in Shimla town? district, no, just So- confined to Shimla only. So properly, so first of all, there can be proper urbanization, because the urbanization carried out in Shimla district has been in a very haphazard manner up till now. Mhm. So proper and efficient planning will go a long way in solving the issue of landslides in the Shimla district. Okay, Rohit, as you said कि you have given your option in anthropology. Yes, sir. आपने एक डांस देखा होगा, पंजाबीज डांस लाइक इन द स्ट्रेट मैनर्स, बट जैसे हम हाइट पे निकलते जाते हैं डांस गोज बेंड, वी जनरली बेंड इट अराउंड, डांस हमारा बेंड होने चलता है, जैसे लाइक नाटी एंड समथिंग एल्स। ऐसा क्यों? ये आपका फील्ड है। Sorry, sir. ग्रेविटी पुल, Okay. है ना? अच्छा। एंड द प्रेशर। चढ़ाई चढ़ते हैं ना, Yes, तो sir. कैसे चढ़ते हैं? सीधे सीधे करके। Yes, sir.
gravity bend. सेंटर ग्रेविटी सुना है? Yes, sir, center To of gravity. maintain the center of gravity, Yeah. we bend our bodies. अच्छा, यू आर वर्किंग इन सेक्रेटेरिएट. Yes. ये जो सेक्रेटेरिएट वर्ड कहाँ से आया है? व्हाट इट मीन्स? यू आर वर्किंग इन द सेक्रेटेरिएट. Yes, sir. So the word secretariat has been derived from the words secretary. ओरिजिन कहाँ से हुआ? ठीक कह रहे हैं आप। सेक्रेटरीज ऑफिस. Secretary and और इसका मेन फंक्शंस क्या हैं सेक्रेटेरिएट के? so the policy formation is one of the main functions of the secretariat, which is coordinated by the chief secretary, who coordinates or integrates the working of various departments. So the other functions are effective implementation of the policies that are formulated, and handling various subjects or subheadings such as the issues of transfers, issues of recruitment of various personnels, and Implementing of various schemes, projects. Is it done by the secretariat or is monitored by the secretariat? so it is monitored by the secretary. And who is the implementing agencies? Who are the implementing agencies? So the implementing agencies will be the directorates. Directorate, that is middle level. There are 3 levels of Yes, sir. administration. Yeah, so the bureaucracy. Sorry. Bureaucracy. Bureaucracy is everywhere, even in secretariat, even in directorate, Yes, sir. and lower level field agencies. Even the field agency. Yes, sir. ब्लॉक लेवल now BDO है, आगे Yes, sir, SDMs हैं, Field agencies. हैं, चीफ सेक्रेटरी होता है, Yes, sir. ठीक है. एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम होता है, Yes, sir. होता है कि नहीं? Yes, sir. प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके स्टेट में भी Yes, होगा, sir. सभी स्टेट में Yes, sir. होता है. कौन ज़्यादा पावरफुल है? So the chief secretary is the highest level of bureaucracy or in the administration that one can aspire to reach for the state services. So I think that chief secretary is the higher position of authority. Higher than principal secretary? Yes, sir. ठीक है. ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों होते हैं? Who is principal secretary to CM? So at present the principal secretary to CM is Mr. सेंट्रल मिनिस्टर है. Mr. Kundu. Mr. Central संजय Kundu. कुंडू. कैबिनेट Mr. सेक्रेटरी Sanjay हाईएस्ट पोस्ट जरूर है, लेकिन कोई नहीं. संजय और why the office of State में the chief principal secretary. secretary is there with the CM? क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई? So because प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD है, इरिगेशन है, उधर लेबर का है. because हमारे चीफ मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को खुद ही अपने अंडर रखते हैं, जैसे कि बजट एंड फाइनेंस. आपका कहने का मतलब है कि he deals with those departments which are held by the chief minister, no other department. सर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हें दी जा सकती है, बट जो डिपार्टमेंट्स करंटली सीएम के अंडर है. नहीं बेटे, ये गलत है. वो चीफ सेक्रेटरी करता है, हम भी ऑफिस किए. जितने भी ऑफिस वो के तो सिर्फ ऑफिस का जो पर्सनल पर्सनल ऑफिसर है, Yes, sir. जितनी भी कंप्लेंट जाती है, जितनी भी सिचुएशन जाती है, जितने भी ऑर्डर जाते हैं, सीएम करते हैं. He has to monitor that they are executed. अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. योर पेरेंट्स आर इन पुलिस डिपार्टमेंट, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. It is said that police has been politicized more, ज़्यादा राजनीति में हिस्सा लेने लगी Yes, sir. than the IAS officers, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये ठीक है? अगर है तो क्यों? Sir, you. मेरे क्वेश्चन को समझ आ गया ना Yes, sir. कि पुलिस ऑफिसर पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे रहते हैं ज़्यादा, Yes, sir. और वो पोलिटिसाइज. वैसे ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होती है, Yes, sir. करेक्ट? लेकिन न्यूट्रलिटी की तो मिथ होगी ना, इट हैज बिकम ए कैजुअलिटी. लेकिन IAS ऑफिसर्स जो है Yes, sir. और पुलिस ऑफिसर्स, इसमें पुलिस जो है वो ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हो गई है दैन दी IAS ऑफिसर्स. क्यों? So I think that. ये ठीक है? पहले क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन किया वो ठीक है या नहीं? डू यू एग्री? पहले
इन सम वेज आई एग्री विद यू, जो आपने बोला वो सही है, क्योंकि वो एक तरह से हमारी कॉलोनियल लेगेसी का इफेक्ट है, क्योंकि जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पुलिस मशीनरी बनाई इसलिए थी ताकि वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईएएस ऑफिसर किन्होंने बनाया? सब वो भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया। फिर सब वो ब्रिटिश लेगेसी नहीं? सर बट उसकी लेगेसी इस वे में मोल्ड हो चुकी है कि हमें हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके माइंड में पुलिस के बारे में ऐसी परसेप्शन है दैट दे आर समथिंग लाइक अ टूल एट द हैंड ऑफ द पॉलिटिशियन फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स। और Police officers serve their masters, whereas IAS they serve the public. एक चीज़, पुलिस ऑफिसर पब्लिक से इंटरकनेक्शन ज़्यादा होता है यस सर, देन दी आईएएस ऑफिसर्स, यस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इनके थ्रू ही सब कुछ करता है पब्लिक के वोट बैंक रखने के लिए, और उनको प्रेशराइज करता है। कोई FIR होगी, अरेस्ट हो गया, को सब MLA उसी को डाल- बोला, MLA जो है वो DSP को बोलेगा जाओ छोड़ दिया। IAS तो नहीं करता ना ऐसा, डीजी नहीं करता ऐसा। Anyway, So you play football also? yes sir. You have written here. Yes. So occasional football, and I watch football and follow football a lot. प्ले फुटबॉल और वॉच फुटबॉल? Play and watch sir. Play and watch both. Who is the most valuable football player at present? I mean, since the inception of football sports, Sir, at club level or sir, international level. सर बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई मेथड नहीं है वॉच करने का प्लेयर वैल्यू को। एट क्लब लेवल एट प्रेजेंट द मोस्ट Value, I'm not saying from money point of view. I mean, who has been honored as who has been adjudged as the best player so far? सर देयर इज some debate about it, but the two of the best players that are considered by many to ever have to play the game are Pele and Maradona. No. The best player has been adjudged as जो Argentinian है, क्या नाम है? So Lionel Messi. Lionel Messi, and he has got he has been facilitated 6 times as the best player, and he has been given 2 golden shoes also. Sorry sir, I would like to correct you. That will be 5 times. He has been adjudged the best player 5 times. 6 times. Recently he has again been adjudged. No sir, that award is. Let it be 5, but Let it be but 5. he has been adjudged as the best player so far. Yes sir. ठीक है? So, but there is some conjecture about it that he is still to lift a World Cup trophy, and some That Yes. World Cup trophy is won by the team, not by a individual player. yes sir, I agree with that. So don't have any doubt. Do not have any doubt in your mind, Yes sir. because the experts have adjudged him as the best player. Yes sir. So you are to be very specific in your answer. Yes sir. He may not have, his team may not have won any, or during his captaincy he may not have won any World Cup, Yes sir. but World Cup is won by the team, not by an individual. Yes sir, I agree with that. ठीक है? Yes. Okay, any player in football from Himachal? Prominent player? Sorry sir. No player. हॉकी में Sir, गोल्ड I- मेडल किसने लिया था Yes sir. हिमाचल में? Yes. जो कौन सा प्लेयर है जिसके वक्त कैप्टन था और हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था, कौन से ईयर में और कौन था, नाम क्या है? Sir, captain. Sorry sir, I am not able to recall his name, but the gold medal in Olympics of sorry sir, sorry. Okay, Anshul, thank you very much. Thank you sir.